Hello students and welcome back to the channel Learn for Dreams. Learn with fun, say goodbye to boredom. In the last video, we have seen translation, the generalized equation and the numerical. If you have not visited yet, I have provided a link in I button. Today we will see another geometric transformation, that is rotation. Let's understand the rotation of line. This is an original line at an angle phi with endpoints P1 and P2. This is a rotated line at an angle theta with endpoints P1 dash and P2 dash. Now let's understand the rotation of a point. This is XY plane. This is original point P at an angle phi. And this is the point P dash rotated by an angle theta. Consider point PXY is rotated about the origin by an angle theta in anti-clockwise direction to a new point P dash X dash Y dash as shown here. अब ये जो R है, that is constant distance of the point from the origin, and phi is original angular position of the point from the horizontal. Now let's find out the equations for x dash and y dash. Keep this diagram for the reference. Let's consider the triangle formed by an original point PXY. Uska angle is phi. So we get cos phi is equal to adjacent side, that is x, divided by the hypotenuse, that is r. So x का equation मिला, x is equal to r cos phi. Similarly, sin phi is equal to opposite side y divided by hypotenuse r. तो y का equation मिला, y is equal to r sin phi. अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना, formed by a rotated point P dash X dash Y dash. The angle should be considered from the horizontal axis. तो वो complete angle है phi plus theta. हमें x dash का इक्वेशन मिला, x dash is equal to r cos phi plus theta. उसको एक्सपांड कर देंगे. Formula for cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. तो ये है एक्सपांडेड इक्वेशन. r को ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. x dash is equal to r cos phi cos theta minus r sin phi sin theta. Now we will replace r cos phi and r sin phi by x and y. तो अब इक्वेशन मिल गया, x dash is equal to x cos theta minus y sin theta. Then y dash is equal to r sin phi plus theta. इसको भी एक्सपांड कर देंगे. Formula for sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. अब ब्रैकेट को हटा दिया तो हमें इक्वेशन मिला, y dash is equal to r sin phi cos theta plus r cos phi sin theta. फिर से we will replace r cos phi and r sin phi by x and y. So the equation for y dash becomes y dash is equal to x sin theta plus y cos theta. Okay. अब इन x dash and y dash के इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे. तो ये इक्वेशंस मिलता है. इसका जनरलाइज फॉर्म इज p dash is equal to r into p, where r is rotation matrix. Now let's understand the procedure to solve a numerical. A line PQ with endpoints P and Q is to be rotated about origin by 30 degree in clockwise direction. Determine the coordinates of the endpoints for a rotated line. अब यहाँ पर देखो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री. अब ये नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एंगल गिवन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव लेना है
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो यू नीड टू कंसिडर इट एज पॉजिटिव एंगल. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रोटेशन मेट्रिक. पुट थीटा वैल्यू एज -30. एक और बात याद रखनी है, cos minus theta is equal to cos theta and sin minus theta is equal to minus sin theta. ओके, तो हमें ये रोटेशन मैट्रिक्स मिल गया. Then step 2 is find new position of a line. The equation is p dash is equal to r into p. रोटेशन मैट्रिक्स पता है, p के कोऑर्डिनेट्स पता है. अब मल्टीप्लिकेशन करना है यूजिंग कैलकुलेटर. तो p डैश मिल गया 3.232 1.598 x एंड y कोऑर्डिनेट. सिमिलरली फाइंड q डैश. अब सिर्फ यहाँ पे 2 3 के जगह पे आएगा q का कोऑर्डिनेट 7 8. तो q डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 10.06 3.42. ओके. If you want a video about how to use calci for matrix multiplication, then drop the comment below. So this was all about the rotation. Hope you enjoy learning. If you find this video useful, hit the like button and share it with your friends. Also subscribe to the channel Learn for Dreams and don't forget to hit the bell icon.